Hello friends, welcome to Kirti Gurukul classes. Today we are starting our very first topic of political science, which is diversity. What is diversity? So diversity is defined as the state of being diverse or having different varieties. It means having different religions, languages, cultures, etc. इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी है क्या? डाइवर्सिटी का मतलब है कि किसी एक कंट्री या कोई भी चीज़ जो वेराइटीज़ से मिली हो. वेराइटीज़ मीन्स वहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ रिलीजन्स हो सकता है, लैंग्वेजेस, कल्चर्स एसेट्रा. सो इंडिया जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी का. वाई? डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया इज़ द कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें हर तरह की डाइवर्सिटी मिलती है. इट हैज़ वेराइटी ऑफ रिलीजन्स. रिलीजन्स में इतनी वेराइटीज़ है. हिंदुइज़म है, इस्लाम, सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़म एंड बुद्धिज़्म. सो इतने सारे रिलीजन्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेराइटी तो है. सो एक ये है डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स वेराइटी. And another one is it is multilingual state. Multilingual means having multiple languages. Multiple languages, we have in India 22 major languages. Every state has its own language. So it is a multilingual state. State means country. So India is the country of having multilingual state. There is variety of cultures. Cultures की variety है. कौन से कल्चर्स हैं? कल्चर्स हमें पता चलते हैं फूड से, म्यूज़िक से, क्लॉथिंग स्टाइल से, वेरियस डांस फॉर्म से. सो एवरी स्टेट वी नो वेरी वेल कि एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कल्चर. लाइक इन वेस्ट बंगाल when we go we find Bengali style of clothing, food, etc. and which is very different from the other parts of the India. Various dance forms are there. Gujarati, which is Garba, Rajasthani, and very different dance forms. So how the diversity being affected? What are the factors which affects the diversity? How diversity is being created? So we will see in this slide. So first point is people travel from one place to another. This means that when in the historical perspective we see that people from other parts of the country came in India, or from India they go in another parts of the country. This creates accumulation of diversity together. Okay, now let's take an example here. For example, Chinese travelers came to India for exploring Buddhist monasteries. So Buddhist monasteries, which are basically from Buddhism religion. So Chinese traveler came to India to explore these monasteries. And the second, Arab travelers came to India to explore India's prosperity. As we all know that India is the country which is very rich and very prosperous. So Arab travelers came to India to explore India's prosperity. And change in habitats. What does mean change in habitats? So basically होता ये है कि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं तो वो अपनी आदतों में चेंजेस लाते हैं. व्हाट आदतें मीन्स दे स्टार्ट बिल्डिंग होम्स देयर इन विच प्लेस दे केम. सो दिस मीन्स कि वो आते हैं और अपनी चीज़ों को छोड़ के दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं. दिस मीन्स द चेंज इन हैबिटेट्स. सो हैबिटेट्स चेंज तब होता है जब आप अपनी आदतों को मीन्स अपने हैबिट्स को छोड़ के दूसरी हैबिट्स को अडेप्ट करते हो. दिस मीन्स चेंज इन हैबिटेट्स. सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स डाइवर्सिटी. And in the last slide, this is unity in diversity, which is the very essence of India. So इंडिया में बहुत तरीके के रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, but we are unite together and we makes the whole one India. And also this makes us different from other countries as well. So yeah,
this is for today. Now, don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon so that you will get the notifications for the upcoming videos. And do comment in the comment box कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. And if you don't know about the topics for this lecture series, so please go and check out the first video of this channel. So you will get all the topics which we are going to discuss in this whole lecture series. Thank you, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.